हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इंटरनेशनल बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सारे आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, ओरिजिनल नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। इनके अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको पेड फॉर्म में मिलेंगे, फ्री आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ, एक भी पैसा मैं आपको ले नहीं रहा हूँ। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए राइट नोट्स ऑन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है नेफ्टा, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन। साक का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एंड उसके बाद देखिए व्हाट डू मीन बाय। तो ये सारे आंसर्स तो एक वीडियो में नहीं होंगे, लेकिन जितना हो सकता है मैं इसका सीरीज लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नेफ्टा के बारे में देखते हैं। नेफ्टा का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट दैट एस्टैब्लिशेस ए फ्री ट्रेड एरिया बिटवीन कैनेडा, मेक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। फुल स्टॉप। नेफ्टा is the structured in three separate bilateral agreements, the first between Canada and the United States, the second between Mexico and the United States, and the third between Canada and Mexico. उसके बाद पैरा दे दीजिए। उसके बाद लिखिए नेफ्टा establishes rules on tariffs and quotas in accordance with the provisions of the WTO, WTO यानी कि World Trade Organization. Full stop. It also sets only key principles regarding the treatment of foreign investors. It also prohibits the imposition of certain performance requirements such as minimum amount of domestic content in production on foreign investors. उसके बाद देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे हैं ऑब्जेक्टिव्स या नीड्स। नेफ्टा सीक्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? नंबर 1, टू फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द मेंबर कंट्रीज बाय एलिमिनेटिंग ऑल बैरियर्स टू ट्रेड। नंबर 2, टू क्रिएट फेयर कंपटीशन इन द फ्री ट्रेड एरिया। नंबर 3, टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मेंबर कंट्रीज। नंबर 4, टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन ईच कंट्री। उसके बाद देखिए नंबर 4 लास्ट ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर्स। उसके बाद देखिए द की प्रोविजंस अंडर नेफ्टा। व्हाट आर द प्रोविजंस? देखिए क्या है। नंबर 1, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। द नेफ्टा imposes discipline on the development, adoption and enforcement of sanitary and phytosanitary measures. These are the measures taken to protect human, animals and plant life or healthy from risks that may arise from animals or plants, pests or diseases, or from food and additives or complements. Number 2 देखिए एक्सपोर्ट सब्सिडीज। द 3 नेफ्टा countries work towards the elimination of export subsidies worldwide. The United States and Canada are allowed to provide export subsidies into the Mexican market to counter the subsidized exports from other countries. Number 3 देखिए internal support. Under NAFTA, the parties are expected to try and move towards the domestic support policies that have minimal trade or production distorting effects, or towards policies exempted from domestic support reduction commitments under the WTO. चौथा वाला देखिए ग्रेड एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको एग्रीड दैट व्हेन आइदर कंट्री अप्लाइज ए मेजर रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग और मार्केटिंग ऑफ ए डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिजाइन फॉर प्रोसेसिंग इट विल प्रोवाइड नो लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट फॉर प्रोडक्ट्स imported for processing. उसके बाद देखिए द नेफ्टा इज एन इंपॉर्टेंट पैक्ट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कौन सा है? नंबर 1, इट इज़ वेरी फर्स्ट एवर रेसिप्रोकल फ्री ट्रेड accord between the developed and the developing world. Number 2, its creation led to the formation of a tri-national market of more than 360 billion people with a combined purchasing power of about $6.5 trillion. तीसरा देखिए द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेफ्टा helped the procedures of North American, especially the United States, to complete globally. It has also helped to improve the investment climate in the region and has given companies a larger market than before. और चौथा वाला लास्ट पॉइंट देखिए नेफ्टा हैज़ मेनली अफेक्टेड ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली बिटवीन यूएस एंड मेक्सिको. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट यूएस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स टू कनाडा एंड मेक्सिको हेल्प टू क्रिएट अबाउट 2,43,000 जॉब्स इन द यूएस इकोनॉमी इन 2006. तो ये रहे सारे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में वो है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, और उसके अगले वीडियो में या एक साथ ही हम कवर कर लेंगे सर्क को यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए. देखिए इस वीडियो सबको मिलते रहे. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ.